I hope that you people would enjoy about the knowing about her life, her careers. Miss Sara Bhatti, she's a very renowned blogger, also actor, and she's a multitasking kind of personality. थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम दिया। और इसके अलावा जो जितना मैंने आपकी प्रोफाइल को देखा, इट सीम्स लाइक कि आपने अपने पैशन से अपने कैरियर को आगाज़ किया। और थोड़ा सा बताइएगा कि हाउ यू बिकम लाइक, इसमें आपने अपनी एकेडमिक्स के साथ साथ और फिर उसके बाद मीडिया और फिर ये एक्टिंग और ये सारा कुछ कैसे आपने कर लिया इतने कम अरसे में? So thank you so much for having me on your show. It's amazing to actually be here. और I think इसी तरह के platforms ज़्यादा होने चाहिए जिसपे we all can share our experience and we can help other people learn from our mistakes and also our successes. So thank you so much for having me. Welcome. और जहाँ तक आपका सवाल है कि how I started. So I went to LUMS and I did my major in economics and psychology and philosophy. So that's what I studied. While studying, I had started my first proper business. So I started my first business when I was 19 years old. Or I was studying in LUMS at that time, and I was designing. So I was doing a lot of shows, bridal shows, वगैरह at that time. So I've been into entrepreneurship for a long time. I think पहली दफ़ा जब मैंने entrepreneurial like as a child शुरू किया था was when I would charge my friends 5 rupees to look at my Barbie dolls. So I think that was like, and then I got a lot of obviously आपके parents से आपको डांट पड़ती है कि what are you doing? कि आप को 5 रुपए charge नहीं कर सकते just to look at your Barbies. But I think for entrepreneurial जो होती नहीं है कि desire to actually have an idea that you have to share it with the world and kind of make it something real. वो मेरे अंदर हमेशा से था. Of course, learning and going to LUMS university helped me a lot. उसके बाद I never stopped learning. I think that was my edge. I've always taken courses. I did my diploma in blockchain, crypto, currency वगैरह के अंदर. I did it in finance. फिर उसके बाद I did my psychotherapy, I did my nutrition. So I was learning, and in a very short period, मैंने 2-3 चीज़ों को साथ सीख कर I always was able to implement those things in my life. And when I learned कि how learning and self-learning, right, was helping me in my own life, उसी के साथ साथ ज़िंदगी तो चलती रहती है. Where I got my first I had my first job as a model. So that's what my first paid job was. Not an entrepreneurial venture, but I started modeling on the side. I started acting. So I was taking all these things along, which is what I think a human being should aspire to do, and that's what I had always wanted to do. कि relationships को भी साथ लेकर चलूं और उसके साथ always learning और उसके साथ trying to work as well, making money and being a good contributing member of society. That's what I tried to do. Okay. इतना heavy question था. That was a good. नहीं, इसमें जो मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग की एक और चीज़ आई है, आपने कहा कि आपने साइकोलॉजी. I would like to ask. Yeah, please. जी पूछिए रबिया. Sara, I would like to ask कि आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया था, और जब आप एक फील्ड में आ गई तो आपको किस चीज़ ने ये सोचने पर मजबूर किया कि आप और दूसरी डिफरेंट फील्ड्स में जो हैं वो कुछ वहाँ से अडॉप्ट करें? जैसे आप बहुत मल्टी डायमेंशनल सी आपकी प्रोफाइल है, तो इसके लिए इसके बिहाइंड द बैक जो है वो क्या मोटिवेशन थी?
I mean, she want to I think ask that's a like very the good money question. motivation And, thing. because as a therapist, we all learn this thing that, हाँ जी. सारा आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया? आई जस्ट Yeah, वांट so टू you were आस्क के basically asking me what my motivation was to kind of यस be a part of all these fields instead of just remaining in one single thing, and just carrying that on. Is that your यस question? So यस the यस thing या is, ek to wahi I एग्जैक्टली was talking about, sometimes when you're a bit of an overachiever, right? You want to do everything, and you want to learn everything. So मेरे साथ एक सबसे I don't know मसला कह सकते हैं या एक खूबी भी कह सकते हैं, वो ये थी कि I didn't want to. I felt that if you are a just and ethical human being, तो आप हर चीज को बहुत हक के साथ उसका हक अदा करते हुए आप अपनी ज़िंदगी को जीते हो, विच मीन्स कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, आप अगर माँ हो या बाप हो या बहन हो, तो आप उस रिलेशनशिप का हक अदा करते हो. जी. फिर उसके बाद आपकी जो बॉडी है, वो जो आपका जिस्म है, उसका भी आपको हक अदा करना होता है, हाउ टू टेक केयर ऑफ इट. फिर आपका जो माइंड है, व्हाट इज गोइंग ऑन, Yeah. आप अपने अपने माइंड को किस तरह मैनेज कर सकते हो, आप अपने इमोशंस को किस तरह कंट्रोल कर सकते हो, आप अपनी फीलिंग्स वगैरह को किस तरह ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, ताकि यू कैन बी a productive, healthy individual for your friends, for your family, for everybody else in society. उसके बाद एक और चीज़ होती है कि you have to be a contributing member, which means कि आप दुनिया में जब आते हैं, हम सब आते हैं, तो हमारा कोई ना कोई स्किल या टैलेंट होता है जो कि हम दुनिया को देकर जाते हैं या छोड़ कर जाते हैं. वो अगर आप हाउसवाइफ हो और अगर आप माँ हो, तो वो आपका स्किल और टैलेंट है अपने बच्चे की तरबियत करना. Yeah. वो स्किल एंड टैलेंट. इफ यू आर एन इंजीनियर, तो आपका स्किल एंड टैलेंट इंजीनियरिंग है. जी. तो आप दुनिया में कुछ ना कुछ स्किल छोड़ के जाते हो, राइट? बट इन ऑल दीज थिंग्स, जब आप अपने जिस्म का ख्याल रख रहे होते हो, जब आप अपने दिमाग का ख्याल रख रहे होते हो, जब आप अपनी रिलेशनशिप्स का ख्याल रख रहे होते हो, तो ये चीज़ें हमें एक मैनुअल या गाइड में तो नहीं मिली ना, ये तो हम सीखते हैं इन चीज़ों को. So for me, knowing that I did not know these things, and also looking around me and seeing people that they did not know these things. Most of us don't know how to eat. Most of us don't know what to eat. हम सोचते हैं अच्छा वेजिटेबल ये खा लो और उसके बाद नहीं ये भी सही है. फिर हम लोग सुनते हैं ये बातें, लेकिन हम लोग प्रॉपर लर्न नहीं करना चाहते. तो I think I always had a desire to learn what was factually right. नॉट के हेयर से जो कि हमें सब इर्द गिर्द मुझे बता रहे हैं, क्योंकि आई नेवर बिलीव दैट, बिकॉज अगर हेयर से ट्रूथ है तो उसका मतलब तो ये होगा कि हमारे इर्द गिर्द सब अच्छे माँ बाप भी होंगे, हमारे इर्द गिर्द सब हेल्दी होंगे, कोई बीमार नहीं होगा. लेकिन जब मैं देखती थी कि माई ग्रैंड फादर हैड डायबिटीज़, या मैं देखती थी कि इतने ज़्यादा पेरेंट्स बहुत टॉक्सिसिटी के साथ बच्चे रेस कर रहे हैं, या आई वुड सी these problems, and then I realized there must be something wrong. So I just wanted to learn for myself, and in that process, in trying to learn और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, I think what happened was that I became a bit of a teacher, where I would know something and I would just tell everybody else. And that's exactly how raw philosophy came about. Raw philosophy जो है, वो जो मेरी कंपनी है, वो what is it? It's a platform where we share information and knowledge. Even मेरा जो Instagram है, एक point पर मेरा Instagram, being an actress, Yeah. you have to be glamorous. और nobody likes an actress के वो जो जाकर आपको एक sermon देना शुरू कर जाए, lesson सिखाने शुरू कर जाए. तो मुझे बहुत criticism मिलता था, right? कि you're 24, you're 20. तो आई थिंक आपको क्रिटिसिज्म भी मिलता है लोगों से, जी जी जी. और आपको दुनिया से भी क्रिटिसिज्म मिल रहा होता है कि आपको फीडबैक आ रहा होता है कि शायद आपको ये नई चीज कर. Yeah, and especially when you're so glamorous, the world wants to see you as this glamorous person कि आप
अपने गाउन्स में आओ और आप अवार्ड शोज अटेंड करो. बट यू नो आई रियली फील कि अगर हमें अल्लाह मियाँ ने एक पाथ दी है या एक जर्नी दी है जिसमें आपने कुछ भी सीखा है, वो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो चीज़ हमने सीखी है हम उससे पास ऑन करें. तो हमारी अगर कभी भी ये कॉन्वर्सेशन या आई होप कि इट कैरीज ऑन इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह कीप्स गिविंग मी दीज अपॉर्चुनिटीज कि अगर मैं किसी के साथ भी कोई कॉन्वर्सेशन में भी होंगी तो आई वुड रियली लाइक टू लर्न फ्रॉम देम एंड आई वुड होप कि आई एम ऑल्सो टीचिंग देम समथिंग, because that is what life is, us learning, us trying to struggle through it with just with little guides around us, people who can help each other. So I think my motivation was to be a better human being. That was it. Very simple motivation and desire. ज़बरदस्त. अच्छा, इसमें मैम आपने थोड़ा सा जो बताया साइकोलॉजी का आपने स्टडी की, तो आई थिंक एट दैट टाइम, अब तो काफ़ी अवेयरनेस होगी, उस टाइम भी होती होगी, बट आपने चूँकि साइकोलॉजी से फिर आपने न्यूट्रिशन का भी ऐड किया, और फिर उसके बाद मतलब आपने माशाल्लाह कंपनी जो लॉन्च की, आपने मुझे प्लेटफॉर्म का बताया वो तो बहुत ज़बरदस्त है कि जिसमें आप डिफरेंट एरियाज़ को टच करते हुए आप एक्सपीरियंसेस को लेते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं. बट मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप साइकोलॉजी में थी तो आपका फोकस क्लिनिकल साइड पे था या किस तरफ था, आपने या कोई ऐसी स्पेसिफिक आपने डोमेन सेलेक्ट की थी कि आपने उसको टारगेट करना है इन साइकोलॉजी? So it was behavioral. So I actually did CBT, which is behavioral science. That's what I actually did when I was at university. और मेरा जो रिसर्च पेपर्स वगैरह होते हैं वो भी दे वर एक्चुअली ऑन मोटिवेशन एज वेल, एंड आई डिड 2 मास्टर लेवल, उस वक्त मैंने थीसिस की थी, माय अंडरग्रेड एज वेल. तो I was into the clinical side at the beginning, but then I think I kind of shifted a lot towards psychotherapy as well. Okay. So I did do both. I studied both and I learned from both. Both are very, very different because psychotherapy is more, as kuch kabhi kabhi log kehte hain wishy-washy. But some of the theories that you learn in psychotherapy, because psychotherapy is very much about the patient, right, or the individual, and clinical is more about how I perceive the individual to be. तो उसमें मुझे तो अच्छी चीज़ लगती थी, वो मुझे ये लगती थी कि I think थोड़ा सा narcissistic मुझे feel होता है, and that might be a very laden word nowadays, but the fact that especially when it comes to science, तो doctors or psychiatrists, psychotherapists, because they have an education in it, they tend to believe in they have an edge over everyone else, तो इट्स लाइक कि आप मोनोपोलाइज कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को. लेकिन आई ट्रूली बिलीव कि अ ह्यूमन बीइंग व्हेन ही कम्स टू यू, इट डजंट मैटर कि वो आपको आके कहता है कि मेरे दिल के अंदर तकलीफ है, या कोई आपको आके कहता है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम है. वो बंदा, वो इंसान अपनी ज़िंदगी को, वो इंसान अपने जिस्म को, वो इंसान अपने दिमाग को बहुत अच्छी तरह से जानता है. एंड आवर स्टार्टिंग पॉइंट एज एनी प्रोफेशनल इज टू अंडरस्टैंड एंड लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग बिफोर वी स्टार्ट प्रोजेक्टिंग आवर बिलीव्स ऑन टू देम कि हम क्या समझते हैं कि उनके साथ मसला है. क्योंकि इंसान होने की वजह से हमारे अपने पर्सनल बायसेस होते हैं, हमारे अपने बिलीफ सिस्टम होता है. अगर आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो यूरोलॉजिस्ट जो है वो आपको आपकी ही इज गोइंग टू से ओ मे बी इट्स अ प्रॉब्लम विद योर किडनीज और मे बी इट्स अ प्रॉब्लम विद योर ब्लैडर. अगर आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो कहेंगे ओ मे बी इट्स अ हार्ट इशू, राइट. अगर आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएंगे तो वो कहेंगे अच्छा ठीक है खाना फिक्स कर देगा. तो हम सब जो हैं वो अपने बायसेस के साथ आते हैं. और I think what psychotherapy and the way it changed me was it made me very much patient-centered. And when I had my children, I was very, very young. So I did not know much, right? And I felt very lost because within my friends, I was the first one to have children.
So, and my cousins, I'm the eldest. So I was so lost कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था. उसके बाद हर बंदा कहता था नहीं वो मामू आखिरी दफा और चाचू आखिरी दफा कोई 24 साल पहले पैदा हुए थे, हमें नहीं पता. So I think that was a great edge and learning point for me because nobody wanted to help me. Nobody knew how to help me. So usme I was just like, oh my God, I have to learn. And then what psychotherapy taught me was that there is a thing called child-centered parenting, which is, it is not parent-centered, which is me actually getting to know my child. And alhamdulillah, through that, I have been able to have now amazing relationship with both of my daughters because I have managed to give them the respect as individuals की जो उनको needed होती है. आप बच्चे को validate करते हो, आप बच्चे को understand करते हो, और उसमें फिर आपकी जो अपनी personal aggression होती है ना, कभी कभार हम माँ बाप की एक personal aggression होती है जिसमें आप अपना कभी कभार if you're angry then you're taking out that anger on your partner or you're taking out that anger किसी के ऊपर भी, तो वो वाली जो चीज होती है ना, आप अपने आप को अंडरस्टैंड करते हो और अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, उसमें वो आपको बहुत हेल्प करती है. So you're able to manage your emotions very well. And अगर आप दूसरे बंदे को ज्यादा इम्पोर्टेंस और तरजीह देते हो, क्योंकि हमने अपने आप को तो तरजीह देनी ही है, तो वो तो हमारा एक नेचुरल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है फॉर अस टू prefer our survival. So just placing and empathizing with the other person, that's what psychotherapy actually taught me. Empathy तो हम सब में होती है as normal human beings, but to actually be able to express and to understand कि अच्छा नहीं हम सही फील कर रहे हैं, it's okay. बच्चा behave कर रहा है, अगर वो बदतमीजी कर रहा है, लेकिन मैं adult हूँ, so I have to behave like an adult. तो ये जो आप बात नहीं कर रहे कि दो डिफरेंट व्यू पॉइंट से आप आते हो, आप अगर एक ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट हमें शायद अगर यूनिवर्सिटी या स्कूल में पढ़ाया है, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अंडरस्टैंड करें कि वो व्यू पॉइंट शायद सही था, अगर नहीं सही था तो वी डिस्कार्ड दैट व्यू पॉइंट. एंड सो आई प्रेफर्ड साइकोथेरेपी ओवर द ट्रेडिशनल, बट आई एम नॉट गोना से कि मैं ट्रेडिशनल मेथड्स और ऑर्थोडॉक्स मेथड्स को सबको मैं डिनाई कर रही हूँ. बहुत ज्यादा थ्योरीज हैं जिनको मैं अभी भी आई वर्क विद इन माय पर्सनल लाइफ, with the people around me, with my staff, with my teachers, and even with my clients who I coach. So it really works like that. Yeah. Okay. So ma'am, आपने जिक्र किया जैसे like you are mother also and you were very young at that time. So after that आपने जब ये like the media life and all that start की और इसमें भी रही, so what the role of your husband, उनका क्या रोल रहा आपके साथ कि उन्होंने आपको सपोर्ट किया इसमें, या initially they felt कि नहीं ये क्या कर रही हैं आप? So I would laugh because I usually don't like talking about it, but I had a very high profile marriage and then a divorce. So I am a single mother. Okay. Yeah. And I mean, the thing is if I actually look back, my husband, he's an actor, so my first modeling thing जो मेरी आई थी, he was very very incredibly encouraging towards me for it, with my work, and he was always supportive, even though media a lot of times has just these fake rumors he wasn't and all of that. He was actually very very supportive, but I think what actually happens is and this is something that is very valuable for us to understand, and as we grow older, inexperience, right? Because the thing is, sometimes you can be 60 years old but not have gone through certain things and not learned those things. So I think having that experience and knowing that, I realized one thing, कि जब हमारी relationships होती हैं तो लोग black और white नहीं होते. That means nobody is good and nobody is bad. ठीक, agreed. जब भी हमारी relationships होती हैं उसमें it's just that people are different and we have different values. And we have different ways of going about things. Now मैं ये नहीं कह रही कि आपकी values गलत होती हैं. मैं ये कह रही हूँ कि कुछ values जो होती हैं वो आपकी बहुत clash करती हैं. Maybe parenting के ऊपर clash आता है, या maybe आपकी एक कुछ basic values होती हैं, core values, जो कि इतनी different होती हैं कि then eventually you can't, sometimes you can't work together on that, right? So one situation में I think
what worked for me, alhamdulillah, and somebody else was saying it yesterday to me as well, okay, what worked for me was being single. And, alhamdulillah, I've done really well even with that. And, I think remaining within my core values has helped me a lot in my in my life and in my work and in raising my own children. So, but अगर आपका सवाल है कि how important is a spouse? या बिकॉज बहुत सारे ऐसे हमारे आजकल चैलेंजेस हैं, और जैसे आपने खुद ही जिक्र भी कर दिया, और रिलेशनशिप्स का फिर वर्स्ट ट्रेंड भी होता है. सो दैट्स व्हाई आई वांट टू से दैट हम एक बिल्ला मुस्लिम स्टेट में हैं, हमें अपने रिलेशनशिप का ख्याल करना चाहिए. So, I'm sorry, I think I'm losing you. या जी आ रही है आवाज़ आपकी. अच्छा, हाँ. So, I think शादी is a beautiful thing. जी. And what happens is कि if you have a spouse or if you have anyone who supports you in your life, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है. There's no denying that. आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, right? But if your path is to be taken alone, और आपकी जर्नी अगर अकेले है, right? तो I think उसमें भी अल्लाह में आपको सपोर्ट करते हैं. हाँ, वो तो God is supporting. And ठीक है, that path might be a little harder and a little tougher, right? I will absolutely say sometimes a path might be tougher, but a path being tougher does not mean that it can be hard for you. शायद लोगों को आपको नजर आता है कि बहुत मुश्किल बात है. कुछ लोग फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप में होते हुए भी कुछ लोगों के पेरेंट्स शायद सपोर्टिव नहीं होते, कुछ लोगों के स्पाउस सपोर्टिव नहीं होते, कुछ लोगों को अपने सिबलिंग्स के साथ इश्यूज होते हैं, फ्रेंड्स के साथ इश्यूज होते हैं, और कुछ लोगों का ये होता है कि जिनके पेरेंट्स शायद उनकी डेथ हो जाती है, ऑर्फन्स होते हैं. तो आवर लाइव्स समटाइम्स आई थिंक we can't always say कि what is going to be the best way. Of course, a man should be supportive of his wife. A wife is supposed to be supportive of her husband. आप garments हो ना, according to our religion. एक दूसरे के लिए garments, and what does a garment do? Protect. Yeah. Right? It keeps you safe. And also it hides your flaws from the world. So, I think having a good, healthy relationship is amazing. But if that is not your journey and that is not your path, I think that's all right as well. So क्या I think लोगों को बड़ी अजीब सी बात लगती है कि oh my God, वो तो आदमी अभी तक 40 years का और वो सिंगल है और वो औरत सिंगल है. तो I think वो हमारे अपने prejudices हैं और वो हमारे अपने biases हैं, so we can never tell. Yeah. Sara, mashallah, you are such a strong lady. और आपसे बात करके मुझे अंदाज़ा हुआ है कि इतनी मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी के साथ आप जो है वो इतनी हम्बल भी हैं. मैं वही सोच रहा था बिफोर दिस टॉक. आई वाज थिंकिंग कि यू विल बी लाइक अ ट्रेडिशनल मीडिया पर्सन. नहीं, but thank you so much. आई जस्ट गोइंग थ्रू गॉट आपकी जो स्टोरीज हैं और आपकी इंस्टा की, तो माशाल्लाह यू टेक केयर ऑफ योर डॉटर्स अ लॉट, और आपकी पता चल रहा होता है कि यू लव देम, और आपका बहुत कंसर्न है इतनी सारी फील्ड्स के साथ, आप उनको बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हैं. तो इट्स रियली वेरी इम्प्रेसिव कि सच अ स्ट्रॉन्ग लेडी एंड पाकिस्तानी लेडी. मैं मैं आपको एक चीज़ बताऊं, और ये आई थिंक हम सब जो काइंड ऑफ भूल जाते हैं, हम उसको शायद नाम कह देते हैं स्ट्रेंथ का. वो ये है कि हमारी इस दुनिया में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. जी. राइट. तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम शादी करते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मियाँ या बीवी का हक अदा करना इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. राइट. माई उर्दू इज अ लिटिल वीक, सो आई माइट से वर्ड्स अ बिट डिफरेंटली, but I'm trying. But you have to fulfill the role with imanadari. And I always say this, जब आप चूज करते हो कि आप बच्चे पैदा करो, it's a choice that you have made. It's a choice that you make. अगर आप केयरलेस हो फिर वो चॉइस हो जाए, या अगर केयरफुल हो वो whatever it is, but it's a choice you make. Right? It's in your hands. जब आपने बच्चे पैदा किए हैं तो वो बच्चा जो है
वो आपने कोई एहसान नहीं किया उसको पैदा करके, वो आपने बच्चा पैदा किया है, आप उस बच्चे को इस दुनिया में लेकर आए जी हो। वो एक छोटी सी चीज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आखिर में आपसे सवाल किया जाएगा कि आपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का हक किस तरह अदा किया। इसी तरह कोई भी रोल हो जिसमें आप प्रोवाइडर हो, जिसमें आप यू आर द वन हु इज इन चार्ज एंड यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समवन एल्स, आइदर एज अ टीचर, आपके पास बच्चे आते हैं, आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं, एज अ कोच आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, एज अ मदर और अ फादर आपको अलामिया बच्चे देते हैं, राइट? एज अ हस्बैंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर वाइफ। तो वो जो लीडरशिप रोल होता है ना, वो आपका लीडरशिप रोल है, और उस लीडरशिप रोल के साथ बहुत स्ट्रेस होता है। वो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जब आप उस रोल में आते हो तब आपका कैरेक्टर नजर आता है। एग्जैक्टली When Alamia says that I test you through your olad, it is not that your olad should come and be like my mother or father, जी आप मुझे बताएं बताएं आप क्या करें। अलामिया ने ये नहीं कहा। अलामिया ने कहा है I will test you through your children. How is he testing us through our children? कि हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से अदा कर रहे हैं या नहीं, हम उनकी तरबियत कर रहे हैं या नहीं। और उस तरबियत में एक टीचर या एक लीडर की क्या जॉब होती है? टू लर्न। अगर मुझे खुद नहीं पता, अगर मैं खुद जाहिल हूं, तो मैं किस तरह किसी को लीड कर सकती हूँ? तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीखना। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मदर इज टू पेरेंट माई सेल्फ फर्स्ट। मे बी माई पेरेंट्स डिड नॉट नो कि किस तरह करते हैं, बट आई हैव द इंटरनेट, आई हैव बुक्स। सो जब आपके पास कोई भी, इफ यू हैव एनीवन इन योर लाइफ जो आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलामिया देते हैं। विद यू नो दैट स्पाइडरमैन सेइंग विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट। यू हैव पावर टू डू एनीथिंग विद योर चाइल्ड। आप उसको मार सकते हैं, आप उसको बाहर खड़ा कर सकते हैं 6-6 दिन के लिए, आप उसको खाना नहीं दे सकते, आप उसको जिस तरह मर्जी करना चाहते हैं कर सकते हैं, बिहेव उसके साथ। लेकिन वो आपने सही किया। And now that I learned so much, right? I always felt something was wrong with our parenting system. जी And जी when I started to learn more, I realized something was wrong. And so I have to be a mother because I've chosen that job and responsibility. It's my responsibility to be a mother. Whether I want to be a good mother or a bad mother is going to be up to me, right? So, सारा you know, a इतने lot of सब people say, oh my God, I have never seen a mother like you, या तुम कुछ बड़ा एक बहुत, you know, a lot of people come to me and they're like, even just आप भी कह रहे हो, right? And of course, I'm grateful for the praise. It means a lot to me when people appreciate that. But at the same time, I keep on thinking कि लेकिन ये तो मेरी जॉब है, मुझे तो यही करना है, you know? मैंने कोई बड़ी चीज तो नहीं की, मैंने तो सिर्फ वो किया है जो कि मुझे करना ही था। इट्स सो अनफॉर्चुनेट एंड सैड कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो बेसिक चीज भी नहीं कर रहे हैं। कि अगर कोई इंसान बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को हक के साथ अदा करता है, तो वो हमें कभी कभार फील होता है कि दैट पर्सन इज डूइंग अ लॉट। सो सारा मेरा आपसे so I do क्वेश्चन है इस feel बात पे कि आप हाउ डू यू रिफ्रेश योरसेल्फ, लाइक री एनर्जाइज के इतने सब कामों के बाद पर्सन नीड पीस फॉर हिज और हर माइंड, तो हाउ डू यू डू दैट? या मैं भी पूछना चाह रहा था कि आप कैसे करती हैं, और इसमें एक और चीज़ की क्रिटिसिज्म जो आप पे अगर नेगेटिव आए तो उसको कैसे आप डील करती हैं जब हर्ट हो तो? मुझ पर तो बहुत नेगेटिव क्रिटिसिज्म और तनकीद आती है, इवन मीडिया की तरफ से एंड ऑल ऑफ दैट। व्हाट आई फील इज कि देखें, अगर कोई मुझे तनकीद करेगा कि ये अच्छी माँ नहीं है, तो वो तो उस तनकीद करने के लायक ही नहीं है। he or she is not somebody who can even criticize me, you know? क्योंकि जो क्रिटिसाइज मुझे करेगा वो तो मेरी औलाद करेगी ना उस चीज पर। अगर उस रोल पे कोई और मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है,
तो it means nothing to me. But if my child is going to be like, mother, you are not Yeah, doing yeah, this well, then I all of a sudden have to be like, okay, maybe my child has a valid point, maybe I am being a little harsh. तो और जब वो क्रिटिसाइज अगर मुझे करे और मैं अपने आप को सही कर सकूं इवन बच्चे की तनकीद से, तो वो मेरा एक आई एम लकी टू हैव दैट, यू नो, कि उससे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ. तो जो लोग उस जगह पर है ही नहीं, जो कि मुझे इट डजंट मैटर टू मी कि वो जिनको मेरी जिंदगी के बारे में नहीं पता, वो अगर मुझे क्रिटिसाइज करें, तनकीद करें, कभी कभार कमेंट्स दिल को लग भी जाते हैं, यू नो, लेकिन फिर आप सोचते हो कि who are they, you know, I mean, you love your fans and maybe that's why it hurts. I do love my fans and that's why it hurts, right? But at the same time, वो उसको मेरी जिंदगी के बारे में नहीं पता. This person has chosen to come or even talk about me behind my back. मेरे शायद friend circle में हो. That person has chosen to discuss me. I am so important, but why? Yeah. You know, if you're learning something from me, then I can understand I'm important. Yeah. You know, but if you're sitting there and criticizing me, I don't understand why I should be important. And if I am important, हो सकता है कि उसी criticism में वो मुझे ज्यादा देखें और शायद कुछ अलामिया, you know, मुझे information वो दे दे जो उनको help कर दे उस point पर, you know. So I think hating me in a way can also be, वो नहीं होता, हजरत अली said के it doesn't matter whoever gives you advice, I'm not really sure exactly what it was, but he said कि आपको इंसान नहीं देखना चाहिए, जब एडवाइस आ रही होती है ना तो एडवाइस आ रही होती है, और एडवाइस अल्लाह की तरफ से आती है. तो they can hate me, it's okay to hate me, but हो सकता है कि I am supposed to be somebody जो अल्लाह मियाँ ने, हो सकता है उनको कोई हिदायत देनी हो या कोई उनके लिए एडवांटेजेस सिचुएशन होगी जो मेरे वर्ड्स के थ्रू उनको समझ आ जाए, और हो सकता है वो समझ कर भी, वो सीख कर भी, फिर भी वो मुझ पर थूके और मुझे हेट करें. बट दैट डजंट मैटर इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, बिकॉज इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स what I have done is I have fulfilled my purpose, which is to help somebody else learn something. So they can hate me as long as they are improving their life. I'm fine with that. You know, so I'm okay with the criticism and hate. Yeah. Zabardast. Yeah. So Sara, you have left the other part of the question. Okay, how do you refresh yourself? Okay, so how do I refresh myself? I think पता है mindset बहुत matter करता है इस चीज़ के अंदर. Now, you know, जिस तरह अब मैं बच्चों की ज़्यादा बात करती हूँ because I feel especially with mothers or with fathers, usually आप बाहर काम पर चले जाते हो तो फिर भी आप दोस्तों के साथ बात गपशप कर लेते हो और you feel that you're refreshing yourself, right? But जब आप usually family के साथ आते हो तो एकदम से आपका डाउनर आ जाता है और आप कहते हो कि क्या यार बच्चे इतने तंग कर रहे हैं, ये वाली चीज़, राइट? और ये मर्द और औरत कोई भी हो, आपकी हमेशा इस तरह की, you know, a lot of times people have that kind of feeling. So I think looking at it as a blessing, and that is a mindset, right? With gratitude, कि you're never gonna have this time again. ये जो अभी हम लोग conversation कर रहे हैं, right? हम लोग की ये वाली conversation कभी भी जिंदगी में repeat नहीं हो सकती. We cannot have this conversation again in ever, right? So it is a blessing for me and it is a blessing for you. It is a blessing for all three of us to actually be in a position right now जिसमें हम तीनों बैठे हुए हैं और हम तीनों ये conversation कर रहे हैं, right? इसी तरह आपके बच्चे के साथ ये moment वापस नहीं आएगी, ये time गुजर जाएगा, and it will pass, and it passes quickly. I know it seems like it's slow, it passes very very quickly. So first of all, I think हम responsibility को देखेंगे कि ये short lived है, ये temporary है. The good time is gonna go, the bad time is gonna go. तो I think आप उसको ज़्यादा value कर सकते हो और आप ज़्यादा grateful हो सकते हो. उसके अलावा I think discipline. Once you have discipline, your life can change. Most people don't have discipline. What discipline does is कि अगर आपकी एक routine में life set है, तो you can then have the luxury of having free time. And free time can be anything for you, right? It can actually be learning more. It can be reading books, which I love. It can be watching movies, right? Because we're all humans, और entertainment का purpose ही होता है, and that's why I love dramas and theatre and art.
because उसका पर्पस होता है टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन. बट टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन जो होती है वो भी हम लोग चूज करते हैं कि हम उस टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन में हम क्या चूज कर रहे हैं. व्हाट आर वी चूजिंग something that is not helping support our growth, or are we choosing something that is actually toxic to us, या फिर कोई वो चीज जो कि हमें हेल्प कर रही है to become a better person. And there's a lot of literature, there's a lot of art, and there's a lot of fiction, facts. It depends on what you want and what you have. We're living in 2022, right? We have so many ways to entertain ourselves. I use books, I use television, but is that entertainment feeding us? You know? Or I'm going to actually say one more thing that I really always talk about, and it is that we think unwinding is basically कि हमने टीवी देखी, हम दोस्तों के साथ गपशप लगा दी. That's unwinding, right? No, that's not. Just like your body needs food, which is nourishing food, right? And it's the healthiest and happiest when you nourish it. You're the healthiest and happiest अगर आप थोड़ी सी मुश्किल चीजें करें, जिम जाएं. You're the healthiest and happiest अगर आप अपने 20s और 30s के अंदर अपनी जॉब में पूरी मेहनत से पैसे कमाएं. So आपकी लाइफ बाद में आसान हो जाती है. अगर आप जिम जा रहे हैं तो आपकी बॉडी भी फिट लग रही है, you're looking good, right? अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं, a lot of times girls go like, देखो मैं पतली हो गई, I'm so much more confident about myself. Men go to the gym, they're like, I feel so better, you know. Those, by the way, those are unwinding things. That's self-love. That's helping yourself become better, and that's what enjoyment is. That is how you should take care of us. We should all take care of ourselves in that way. We should take care of ourselves in the way कि हम अंडरस्टैंड करें कि शायद हमें टेम्पररीली वो मुश्किल लगेगी, लेकिन एक्सरसाइज के बाद एंडोर्फिन्स रिलीज होती हैं. आई एम हैप्पियर, आई एम फास्टर. सो दैट इज अ गुड अनवाइंडिंग थिंग. व्हेन वी फॉलो नेचर and follow its laws and rules, I think that is what unwinding is. Garbage is not good for us, not for our brain, for our body, or you know, for anything. Yeah, that was a good question though. ज़बरदस्त मैम. इतनी जल्दी हमारा तकरीबन घंटा गुजर गया. अमूमन जब मैं सेशंस करता हूँ तो सम टाइम जो है वो 30 to 40 मिनट्स में हम कंक्लूड करते हैं. बट इट वाज वेरी वंडरफुल डिस्कशन विद यू. टाइम का पता नहीं चला. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऑल्सो आई विल इन्वाइट यू इन अ पैनल ऑल्सो. और आपका टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है. एंड आई होप आफ्टर दिस रिकॉर्डिंग ऑडियंस विल ऑल्सो एंजॉय दिस. Anything you want to share about from my platform that you feel कि बहुत ज़रूरी हो? Otherwise आपने बहुत सारा कुछ अच्छा शेयर कर दिया है, but in one line what you want to say? I'll say one thing that I think we worry about things which are not important. You know, we'll worry that our children are being rude to us. We worry that my partner doesn't make proper khana for me. We worry that my husband वो मुझे shopping के लिए नहीं लेकर जाते. We worry about parents के साथ भी, job पर भी, you know. And I know छोटी चीज़ें matter करती हैं, but हम कभी कभार बहुत ज़्यादा overwhelm हो जाते हैं छोटी चीज़ों के अंदर. और वो जो छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो हमारा big time ले लेती हैं, which is a small thing becomes very a big problem for us. And in life, trust me, we will have big problems. Okay? So we will be having big problems. We will be having big troubles. In life, we will be having all those issues. So जब कोई issue बनाने वाली बात नहीं है ना जिंदगी में, जब कोई problem नहीं है, जब कोई छोटी सी एक प्यार से वो चीज़ resolve हो सकती है कि बेटा ऐसा हम बात नहीं करते, देखो कितना rude लगता है, आराम से आप 5-6 मिनट बच्चे के साथ बैठकर उसको एक्सप्लेन करो, राइट? आराम से उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो, ट्रस्ट इस्टेब्लिश करो, राइट? चीखने की जगह. बीवी के साथ इस तरह की रिलेशनशिप, अपने बॉस के साथ यू कल्टिवेट अ गुड रिलेशनशिप, अ हेल्दी रिलेशनशिप, राइट? एंड यू डोंट फोकस ऑन दीज छोटी छोटी चीजें. लेट देम गो, लेट दीज लिटिल थिंग्स गो. अगर किसी ने 5 मिनट के बाद कॉल नहीं की ना, इट्स ओके. It's okay. It's not an ego issue. I feel वैसे मैं ये फील करता हूँ जब कोई रिस्पॉन्स ना करे. Yeah, but the thing is, see, that is what positive bias is. Having a positivity bias is this. कि अगर आपको कोई 5 मिनट बाद रिस्पॉन्ड ना करे या ईमेल ना करे या मैसेज ना करे,
You don't know what's going on in their life. People don't say a lot, right? And it's okay. So what? 5 मिनट बाद नहीं रिस्पॉन्स किया. और एनीथिंग एल्स, अगर किसी कोई आपके फेवरेट, लाइक किसी ने आपके फेवरेट कपड़े नहीं दिए, जो गिफ्ट आपने दिया वो हो सकता है वो किसी ने किसी और को दे दिया, यू नो. ये बहुत छोटी चीजें हैं. नहीं, अगर लव्ड वन ऐसा कर दे फिर Yeah, and the thing is, loved ones absolutely do that, and it hurts us. But the thing is कि उन चीजों को पकड़ के रखना, आप सोचो, आप इतनी छोटी छोटी चीजों को पकड़ रहे हो, कल उसी शख्स की, that person's gonna get old, you're gonna get old. We have 70 to 80 years on this planet. Do you realize how short that time period is? And of that time period, youth is so short-lived. We all are going to get older. We're going to get sick. We all are dying right now. Every single day, we're moving towards our death. So understand that we don't have a lot of time to be who we are. We don't have a lot of time to spend with all of our loved ones. तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, एक हैबिट बनाए उनको अवॉइड करना, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना. सो आई थिंक माई लिटिल लेसन टू एवरीबडी would actually be, avoid things that don't serve you in the long run. Just leave it. Exactly. Just leave it. Just let it go. And let your relationship flourish organically. क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना और कंप्लेन करना, ये तीन चीजें जो हैं वो अपने आप को कॉन्स्टेंटली इन चेक रखें. एंड यू नोटिस कि वंस यू स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, कंडेमिंग एंड कंप्लेनिंग, योर एंटायर लाइफ इज गोना चेंज. इट्स गोना चेंज. there's going to be gratitude that fills up space. Yeah. So yes, that's जबरदस्त, बहुत खूबसूरत बात. Thank you so much, ma'am. It was very interactive and productive, and also very nice talk with you. Thank you so much for your time. And again, I will invite you and hope कि हमारा ये अच्छा maintain रहता रहेगा session. absolutely. Thank you, Sara. Very inspirational, and we are feeling so proud to have you in our show, because ये women का platform है, और एक मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है जो कि मैं आपसे inbox में share करूँगी. Yeah. So, thank you so much. To have you. Thank you. Thank you so much. Oh, thank you. Yeah, Allah thank you. Chale. Take care of yourself. Thank you so much.